સંસદ ભવન પર આતંકી હુમલાની 22મી વર્ષે સમયે લોકસભામાં જોરદાર હંગામો થયો। લોકસભામાં શૂન્યકાળ દરમિયાન દર્શક દીર્ઘામાં બેઠેલા બે યુવક લોકસભામાં કૂદ્યા અને ટેબલ ઉપર કૂદતા ધુમાડો અને સ્પ્રે કરી રહ્યા હતા। આ ઘટનાના કેટલાક સમય પહેલા સંસદ ભવનની બહાર ટ્રાન્સપોર્ટ ભવનની સામે પણ એક યુવક અને એક મહિલાએ લગભગ આવા પ્રકારનો ગેસ સ્પ્રે કરી અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા। આ ચારેયની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। और हम जो गैलरी में बैठे थे उधर से ही वो बच्चों ने जो आए थे लड़के उन्होंने जम मारा नीचे। एक्चुअली सब संसद में सब ये चल रहा था, संसद चल रहा था, तभी डायरेक्टली वो कूदे। पहला एक बंदा कूदा एक साइड से और दूसरा फिर पोल से लटक के नीचे गया और उसने कुछ तो भी येलो कलर का धुआं छोड़ा अंदर। सब हम पैनिक हो गए और पैनिक होकर सब बाहर निकले। कुछ संशोधन ने उनको पकड़ा, वो बेंच पे भाग रहा था, उसको कुछ संशोधन ने उनको पकड़ के मारने लगे। फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स आए उधर और सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पकड़ लिया। संसदनी अंदर हंगामो करनारा एक युवकનું નામ સાગર શર્મા છે અને બીજા વ્યક્તિનું નામ મનોરંજન ડી છે। મનોરંજન ડી કર્ણાટકના મૈસૂરનો વતની છે। બીએસપી સાંસદ દાનિશ અલી પ્રમાણે બંને યુવકોને ભાજપના સાંસદ પ્રતાપ સિન્હાના કાર્યાલય દ્વારા પાસ જારી કરવામાં આવ્યા હતા। हर एक रो में सिक्योरिटी उनकी रहती है, उनमें वहाँ 2 सिक्योरिटी एजेंट्स पहले से बैठे हुए थे। अगर आप पैर टेढ़ा भी करो तो भी वो लोग बोलते हैं कि आप पैर ऐसे नहीं रख सकते। तो इतना टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी किसी को भी समझ में नहीं आया। संसद तो चल रही थी, एकदम से उसने कूदी मारने के बाद ऊपर गैलरी में तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले लगा कोई गिर गया, अचानक से पहले कोई गिर गया ऐसे लगने लगा, लेकिन फिर उसके बाद वो जैसे भागने लगा बेंचेस के ऊपर तो समझ में आ गया कि कुछ तो मन में लेके आया। 2 लोग थे, दूसरा वाला ऊपर गैलरी में ही था। फिर वो ये 30 सेकंड में घटी है घटना। पहले वाले की कूदी के बाद वो दूसरा जो था गैलरी में रेलिंग है, रेलिंग से लटक गया। ऊपर से उसने कूदी मारने की कोशिश की, डर के मारे शायद थोड़ा लटक गया और फिर उसने कूदी मारी अंदर। તો દિલ્હી પોલીસને મળેલી જાણકારી પ્રમાણે ટ્રાન્સપોર્ટ ભવનની સામે જે બે દેખાવકારોને એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા તેનું નામ અનમોલ શિંદે અને નીલમ છે। નીલમ હરિયાણાના હિસારની વતની છે અને અનમોલ શિંદે મહારાષ્ટ્રના લાતુરનો વતની છે। બ્યુરો રિપોર્ટ GSTV।